Hello guys, guess what? Episode 2 of our foreign word series just dropped, and today we are flipping things vice versa. You will understand the words first and then realize you have been using them your whole life. Think about those random singing sessions with friends. Yup, that's karaoke. And when someone suddenly asks you to speak and you just wing it, boom, that's impromptu. If you are ready for more cool discoveries like these, let's jump straight into episode 2. The first is Enfant Terrible. The meaning is a person who behaves unconventionally or provocatively. Basically, a person who shocks, embarrasses, or disrupts others by being bold, unconventional, brutally honest, or rebellious, right? And ज़्यादातर वो सिर्फ बुरा नहीं होता, लेकिन बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है. एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर आर्टिस्ट, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, मतलब बेसिकली कोई भी जो नॉर्मल रूल्स को, नॉर्म्स को फॉलो करने से मना कर दे. द नेक्स्ट इज ऑन रूट. द मीनिंग इज इन ट्रांजिट, ऑन द वे. Basically, it is used to indicate that someone or something is in transit. It is on the move and it is moving towards the destination. ठीक है? It is already in progress. This is common in travel, formal communication, and announcements. The next is Esprit De Corps. The meaning is a sense of unity, pride, and common purpose among a group. Basically, एक हारमोनियस फीलिंग होना, एक यूनिटी की फीलिंग होना, प्राइड एंड नोइंग, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग होना इन अ ग्रुप, राइट? द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस इज स्पिरिट ऑफ द बॉडी एंड दिस क्रिएट्स कोऑपरेशन एंड मोरल. द नेक्स्ट इज ex gratia. The meaning is given voluntarily without obligation. Basically, something which is done voluntarily without legal obligation, ठीक है, and it is done to show kindness or maintain a goodwill, ठीक है. This is common in insurance, law, corporate settings. The next is forte. The meaning is a strong point or talent. Basically, किसी person का एक strong point होना, ठीक है, and एक ऐसा area जहाँ पे they excel, मतलब एक ऐसी चीज जिसमें वो बहुत अच्छा करते हैं. For example, किसी की maths could be their forte. For someone, it could be their public speaking skills. Or hosting or leading. This could be anyone's forte, right? The next is impromptu. The meaning is done spontaneously or without prior planning. मतलब कोई ऐसी चीज कर देना जो कि पहले से जिसकी planning ना हुई हुई हो, सोचा ना हुआ हो, and in the moment कर दिया जाए, ठीक है, without planning or rehearsal. For example, speech में, performance में, decisions में. For example, in an assembly, कोई person जिसने speech देनी थी वो नहीं आ पाया. So one stands and they wing an impromptu speech. The next is in situ. The meaning is in the original or natural place. Basically, this is used when something is left where it originally belongs. जो चीज जहाँ की है उसको वहीं पे छोड़ दिया जाए, ठीक है. उसके बारे में अगर आपको कोई स्टडी करनी है, कुछ ऑब्जर्वेशंस करने हैं, उसको जो है आप उसको बिना हिलाए वहीं से ट्रीट करोगे या फिर एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक है. दिस इज कॉमन इन आर्कियोलॉजी, मेडिसिन, आर्किटेक्चर एंड बायोलॉजी. द नेक्स्ट इज इन टोटो. The meaning is entirely, completely. This is basically used to say something is taken as a whole. कुछ भी एक्सक्लूड नहीं किया गया, ऑल्टर नहीं किया गया या मॉडिफाई नहीं किया गया, ठीक है. दिस इज ऑफन यूज्ड इन लॉ, academic writing और formal criticism. The next is ipso facto. The meaning is by the very nature of the situation. This is basically used to explain that एक चीज की वजह से, एक फैक्ट की वजह से ऑटोमेटिकली कुछ और चीज consecutively होगी, ठीक है. Something that happens directly and as an inevitable result of something, ठीक है. जैसे अगर आपने असाइनमेंट सबमिट करना आप भूल गए, आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, तो इप्सो फैक्टो यू विल बी डिस्क्वालिफाइड और आपको एग्जाम नहीं देने देंगे, ठीक है. द नेक्स्ट इज karaoke. The meaning is singing along to recorded music with lyrics displayed. Basically, this is made of two words, kara and okay. The kara means empty and okay means orchestra. So ये एक एंटरटेनमेंट का फॉर्म है जहाँ पे लोग जो है गाना गाते हैं, स्क्रीन पे लिरिक्स आते हैं, कोई गा नहीं रहा होता. देयर इज नो सिंगिंग बिहाइंड बट देयर इज द ऑडियो ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है.
The next is laissez-faire. The meaning is policy of minimal interference, letting things take their own course. This basically means letting people do as they wish. ये एक ऐसी पॉलिसी है जहाँ पे कोई भी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेगी या फिर हर एक चीज़ नहीं बताएगी ये तुम ऐसे करो या फिर ऐसे करो. They let the people, they let the employees do the things on their own course as they wish. They just need the results. ठीक है, वो कैसे तुम कर रहे हो उसमें उनका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होएगा. The next is Lingua Franca. The meaning is a bridge language used between different groups for communication. Basically एक ऐसी language जो कि common हो, सबको आती हो, जिसको use करके the people of different languages or different linguistic associations can communicate with each other. Right? जैसे English is the universal language. हर कंट्री में इंग्लिश इज दी लैंग्वेज जो कि नॉर्मली लोगों को आती ही आती है, राइट. एंड कोई भी कॉन्फ्रेंसेस में, कोई भी मीटिंग्स में, टू पार्टीज हु बिलोंग टू डिफरेंट नेशंस वुड टॉक टू ईच अदर इन इंग्लिश. द नेक्स्ट इज मैग्नम ओपस. द मीनिंग इज अ ग्रेट वर्क, especially the greatest achievement of an artist or writer. This is basically a person's greatest achievement, especially in art, literature, music or scholarship. मतलब अपने फोटे में कुछ सबसे अच्छा करना, कुछ सबसे अच्छी तुम्हारी अचीवमेंट, सबसे बड़ी अचीवमेंट. द नेक्स्ट इज Modus Operandi. The meaning is characteristic manner of doing something. Basically कुछ करने का तुम्हारा यूजुअल तरीका. ठीक है, मतलब अगर तुम कोई चीज कर रहे हो तो तुम ऐसे ही करोगे, ये तुम्हारा वे ऑफ डूइंग इट है ना. सो इट रेफर्स टू अ हैबिचुअल वे ऑफ ऑपरेटिंग. इट इज mainly used in crimes, business and psychology. The next is Nexus. The meaning is a central link or connecting point. This is basically a connection or link between things. ठीक है, एक central point है जहाँ पे ideas, events और systems usually meet. ठीक है, this is used in sociology, politics, literary criticisms. ठीक है. The next is Parole. The meaning is supervised early release of a prisoner. ठीक है, ये एक कंडीशनल रिलीज होती है ऑफ अ प्रिजनर. ये फुल सेंटेंस सर्व होने से पहले जो है ग्रांट कर दी जाती है. ठीक है, बेस्ड ऑन गुड बिहेवियर एंड सुपरविजन. बेसिकली जो बंदा कोई जेल में है, ठीक है, एंड ही सर्व्ड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम एंड उसने जो है अपना अंदर बिहेवियर बहुत अच्छा रखा है, बहुत डिसेंट रखा है, तो उसको पैरोल पे जेल से बाहर कर देते हैं. ही इज स्टिल आंसरेबल टू हिज पैरोल ऑफिसर. ठीक है, and he cannot commit any other crime because if he does, he'll be sent back to jail. So if he wants to stay out, he needs to be civilized. The next is penchant. The meaning is a notable preference or inclination. Basically किसी के towards या फिर किसी चीज के towards एक आपका likeness होना, preference होना या फिर inclination होना. ठीक है, this is more of a habitual thing. जैसे कुछ लोगों को रात में पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है. They think that is more beneficial to them. कुछ लोगों को वर्कआउट करते हुए ईयरफोन्स लगा के अपने गाने सुनने होते हैं, कुछ को नहीं. सो दैट इज मोर ऑफ एन इंक्लिनेशन. ठीक है, दिस इज सब्जेक्टिव टू एवरी पर्सन. द नेक्स्ट इज प्रिमा फैक्सी. द मीनिंग इज एट फर्स्ट साइट बेस्ड ऑन इनिशियल इम्प्रेशन. बेसिकली जब आप किसी चीज को फॉर द फर्स्ट टाइम देखते हो तो आपका जो इम्प्रेशन बनता है, ठीक है, एट द फर्स्ट साइट. फॉर एग्जाम्पल कोई नेगोशिएशन हो रही है, ठीक है, एंड एक कॉन्ट्रैक्ट बना है. एट द फर्स्ट साइट, ठीक है, इनिशियल इंप्रेशन में ठीक लग रहा है कि हाँ यार दोनों पार्टीज का इक्वल बेनिफिट है, सही है. बट जब थोड़ा डेप्थ में पढ़ा गया, उसको अच्छे से पढ़ा गया, तब पता चला कि ये चीजें जो है उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, इसमें इसका नुकसान हो रहा है. ठीक है. The next is rendezvous. The meaning is a planned meeting or location for meeting. This is basically एक meeting जो कि plan की गई है. This is mostly secretive, romantic and strategic कि हम इस समय पे यहाँ पे मिलेंगे क्योंकि हमारी situations जो है ऐसे easy होंगी. ठीक है. The next is safari. The meaning is an expedition, especially to observe or hunt animals in the wild. बेसिकली जब आप एक जंगल में या फिर किसी वाइल्ड एरिया में वेयर देयर आर एनिमल्स प्रेजेंट, वहाँ पे आप एक जर्नी लेते हो, ठीक है, एंड टू ऑब्जर्व द एनिमल्स एंड और हंट देम. ठीक है, दिस इज मोस्टली डन इन अफ्रीका. द नेक्स्ट इज Sangfroid. The meaning is calmness and composure under pressure. Basically
प्रेशराइज सिचुएशंस में काम एंड कंपोज्ड रहना, जो चीज़ है उस पर फोकस करना rather than दी प्रेशर या फिर टाइम बीता जा रहा है. Basically doing the thing that matters. The next is status quo. The meaning is the current condition or existing arrangement. Basically जो अभी जैसा चलता आ रहा है उसको वैसे ही करते रहना, ठीक है. This is basically the current condition, right? And it is often used when discussing resistance to change. कि नहीं यार अभी जैसा सिस्टम है वो वैसे ही चलते रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमने कुछ चेंजेस किए तो उसकी वजह से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, and you don't give it a chance to work, right? The next is Tête-à-Tête. The meaning is a confidential conversation between two peoples. Basically दो लोगों के बीच में एक प्राइवेट बात, एक कॉन्फिडेंशियल बात जो कि और किसी को ना पता हो. The next is Vendetta. The meaning is a prolonged feud or rivalry, often involving revenge. Basically this is a bitter, prolonged desire for revenge, and ये generation to generation pass on होता रहता है. कि मतलब इतना पुराना तुम्हारा फ्यूड है, इतनी पुरानी तुम्हारी बहस है किसी के साथ में कि तुमने उससे बदला लेना ही लेना है, तुम्हारे अंदर वो फीलिंग हमेशा रहती है. The next is vice versa. The meaning is with the orders reversed. Basically the other way around, ठीक है. जैसे कि किसी को लगता हो कि ट्रस्ट की वजह से रिस्पेक्ट आती है, एंड सब किसी को लगता हो कि रिस्पेक्ट की वजह से ट्रस्ट आता है. सो इट इज द vice versa, it is the other way around. It is the same thing basically, but it is vice versa. The next is vis-a-vis. The meaning is in relation to or compared with, ठीक है. बेसिकली किसी जो चीज़ों को कंपेयर करना, एक साथ लेकर आना एंड उनको कंपेयर करना, ठीक है. जैसे कि अर्बन डेवलपमेंट को और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को कंपेयर करना विज़-अ-विज़. द नेक्स्ट इज वाइवा वोचे. द मीनिंग इज ओरल स्पोकन एग्जामिनेशन और असेसमेंट. बेसिकली जो आपका स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में एक वाइवा एग्जामिनेशन होता है, दिस इज वाइवा वोचे, ठीक है. द नेक्स्ट इज वी. द मीनिंग इज that is namely or used to clarify what has just been stated, ठीक है. मतलब जैसे हम लिखते हैं ना I.E, that is to say that is, किसी चीज को रेफर करते हुए, है ना. So that is the same thing with. For example, the course included 3 core modules with literary theory, comparative literature and cultural studies. Basically किसी चीज को रेफर करते हुए in a sentence you use with. The next is zeitgeist. The meaning is the spirit or mood of a particular period in history, ठीक है. मतलब एक particular period या characteristics, उसका mood, उसके spirit and how did that time period work. जैसे कि हमारी जो 21st century है उसका zeitgeist is the digital activism, है ना, the technology. This is what represents the 21st century. So that is that. If you found this video useful, make sure to check out our specially designed vocabulary and grammar books. You can order them directly through our website www.cambriona.com, for which the link is given in the description below. They are perfect for students preparing for exams like CUET, IPMAT, NIFT, BITSAT, NDA, or any other after class 12th entrance exams where English is tested. The first book in this series is a vocabulary book. It's compact, simple and structured, covering idioms, fixed prepositions, foreign words and root words. It makes learning more organized, easier and faster. The second book in this series is a vocabulary workbook. It is designed to help you practice and retain the words from the main vocabulary book. With simple, selective and varied exercises, it helps you build confidence and use each word correctly. It's the perfect companion for regular practice and effective revision. The third book in this series is a grammar book. It's a focused, practical guide that covers only the grammar concepts most relevant for your exams. Each rule is explained clearly and simply so you can understand and apply it quickly. This book helps strengthen your grammar, remove confusion, and build confidence step by step. The fourth book in this series is a grammar workbook. It offers practical, exam-oriented exercises that focus on areas where students usually make mistakes. In addition, it includes a few concept-building questions
that may not be directly asked in your exams but are designed to strengthen your base and remove common confusions so you can apply grammar rules confidently. This workbook is a structured, student-friendly tool created to strengthen your grammar and build real exam level confidence. If this video helped you, hit the like button and subscribe to the channel to stay updated and never miss an episode from our idiom series. Thank you.